Welcome. Today we gather here not only to honor the man, Dr. Martin Luther King Jr., but to pick up his work and carry it forward. Please invest yourself over the next 45 minutes because as you may have seen in the events in the news or on your Facebook feed, Dr. King's dream has not been realized across this country or the world. It is evident that no one can sit idly by and assume someone or the government will do the work for you. Human equality starts with each human. Dr. King expressed this when he said, "Human progress is neither automatic nor inevitable. Every step towards a goal requires sacrifice, suffering, and struggle. The tireless exertions and passionate concerns of dedicated individuals." I ask you to please be those individuals. Now PME will come out and do the I Have a Dream speech. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. അതിമതത്തിൻ്റെ ഇരുണ്ട രാത്രി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പുതു പുലരി ആയിരുന്നു അത്. എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷവും കാപ്പിരിന്നും സ്വതന്ത്രനവർ. 100 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം കർത്തവൻ്റെ ജീവിതം ഇന്നും വർണ്ണ വിവേചനത്തിൻ്റെയും വംശ വിവേചനത്തിൻ്റെയും ചാങ്കലായിലാണ്. Ein 100 Jahren später lebte der Neger auf einer einsamen Insel des Armuts mitten in einem Meer materialen Wohlstands. 100 Jahren später ist der Neger immer noch gefangen in den Ecken von amerikanischer Gesellschaft und findet sich in Exil in seinem eigenen Land. Und heute sind wir zusammen, um eine beschämende Kondition herauszustellen. એક અર્થમાં આપણે આપણા દેશની રાજધાનીમાં એક વચનનો ફાયદો લેવાયા છે. જ્યારે આપણા ગધવાયોના ગણતંત્રના બંધારણ સુબરના શબ્દો લખ્યા ત્યારે તેઓ બદ્ધ થતા હતા, જેનો દરેક અમેરિકનને વર્ષો મળવાનો હતો. Roton benini veje ileri fun bobo green beni fun green dudu pelo green fun for a total peleke fun iwa ominira àti elepa fún ìdùnnú. Wọ́n fi hàn bàbá pé àwọn ìlú Amẹ́ríkà ti ṣe ọ̀rọ̀ ìlérí tó bẹ̀gẹ̀ tó jọ̀ọ́ kàyéfì síwá ọmọ dúdú orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Nígbà tó yẹ kí wọ́n fi àlá fún ọ̀rọ̀ ìlérí ológun, Amẹ́ríkà ti fi hàn ṣe búburú lépa àwọn ọkùnrin dúdú nílùú Amẹ́ríkà. Àwọn àpárẹ̀ búburú ti jẹ́ àwọn àmì búburú sí àwọn ọkùnrin dúdú nílùú Amẹ́ríkà. న్యాయదేవత కోసాగారం గొడ్డుపోయిందని నమ్మడానికి మాకు సిద్ధంగా లేదు. ఈ దేశంలో అందరికీ అవకాశాలు దొరకవంటే నమ్మడానికి మాకు సిద్ధంగా లేదు. అందుకే మాకిచ్చిన మాట నిలుపుకోమని, స్వేచ్ఛ, న్యాయ, సంపదలు మాకు కూడా పంచమని అడుగుతున్నాము. Também viemos neste lugar sagrado para lembrar a América da clara urgência do agora. Este não é o momento para a luxúria do descanso refrescante, nem para tomar um remédio tranquilizante do gradualismo. Agora é hora para realizar as promessas da democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Ahora es el momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de la injusticia racial hasta la roca sólida de la hermandad. Сега е времето да направим справедливостта реалност за всички Божи деца. Би било фатално за държавата да пренебрегне спешността на този момент. И това задушно лято на несправедливото недоволността на тегъра няма да премине без една ободряваща лято на справедливостта и равенство.
1963 தான் முடிவு கிடையாது. அதுதான் ஆரம்பம். யாரெல்லாம் இந்த தேசத்தில் கற்பங்கள் எல்லாரும் அமைதியாக போராட்டம் நடக்காமல் இருப்பாங்கன்னு நினச்சாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை, ஒரு பெரிய சிக்கலே வரப்போகுது. இந்த தேசத்தில் கற்பங்கள் எல்லாருக்கும் உரிமையும் சுதந்திரம் வர வரைக்கும் பிரச்சனை தீராது, முடிவும் வராது.革命的风暴将继续动摇我们国家的干净之道国义的到来。但是我必须告诉正在争取公义前线的人们，在争取公义的过程中，我们不能使用暴力。The marvelous new militancy that has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. They have come to realize that their freedom is inextricably bound up with our freedom. हम तब तक संतोष नहीं होंगे जब तक हमारा बदन जो चलने से थक गया है सड़क और शहरों के धर्मशाला में रह नहीं सकते। हम तब तक संतोष नहीं होंगे जब तक हम काले लोगों की बुनियादी गतिस्थाला एक छोटे बस्ती तक, एक बड़ी बस्ती तक नहीं जाती। हम कभी संतोष नहीं हो सकते अगर हमारे बच्चे उनके शान को खो देते हैं और उनकी गर्व चोरी हो जाती है उन निशानों के साथ जो कहते हैं सिर्फ गोरे के लिए।我並冇忽略到喺呢度聚集嘅人群當中，有人飽受苦難同困難，有人啱啱先從啲監獄度出嚟，而你們有些人由於想尋求自由，曾早在居住地慘遭迫害和打擊，並在警察暴行的旋風中搖搖欲墜，生不如死。Ustedes han sido veteranos del sufrimiento creativo. Continúan el trabajo con la fe que el sufrimiento que no es merecido es redentor. C'est un rêve ancré fortement dans le rêve américain. J'ai un rêve qu'un jour cette nation se lèvera et vivra le vrai sens de croyance. Nous tenons cette vérité d'être évident, que tous les hommes créent égaux. J'ai un rêve, un jour, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Tengo un sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado sofocando con el calor de la injusticia, sofocando con el calor de la presión, va a ser transformado en un oasis de libertad y justicia. Tengo un sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. എനിക്കിന്നും ഒരു സ്വപ്നമുണ്ട്. എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്തെന്നാൽ അലബാമയിലെ അധികാരികളുടെ അനുവാദത്തോടെ അവിടുത്തെ വർഗീയത പൂർണ്ണമായി സാധുവാകും. അലബാമയിലെ കറുത്ത വർഗത്തിലും വെളുത്ത വർഗത്തിലും പിറന്ന ബാലികാ ബാലന്മാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പോലെ കൈകോർത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു. С этой верой мы сможем превратить извиняющего разногласия нашего народа в прекрасную симфонию братства. С этой верой мы будем уметь работать вместе, чтобы молиться вместе, бороться вместе, сидеть в тюрьме вместе, стоять за свободу вместе, зная, что мы будем свободными в будущем. Y hoy será el día. Será el día cuando todos los niños de Dios podrán cantar con nueva significación. Mi país es de ti, tierra dulce de la libertad, de ti yo canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo peregrino. Que resuene la libertad de cada cadena montañosa. Y si América va a ser una gran nación, esto tendrá que hacerse realidad. Entonces dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de Nueva Hampshire, que replique la libertad desde las poderosas montañas de Nueva York.
높아지는 펜실베니아 아가네 산에서 자유를 올리게 하자. 눈 덮인 콜로라도 럭키 산에서 자유를 올리게 하자. 캘리포니아의 구름진 경사를 자유를 올리게 하자. Arjabe Sohoga, Jabon Bajane de Terenge, Ergaun Arakashbe se, Ergaun Arakashbe, Ergibi, Ersube, Ergasbeke. Jabon Bajane de Terenge, Ergaun Arakashbe, Sube, Habasha, Java, Gula, Gora, Apiz, Isai Protestants out Catholics. Ek dusra ke napati vindike, Gek Budi, Gek Buddha.